Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture we will discuss about the angiosperm. That video was just about the introduction of angiosperm. In this video we will discuss about the life cycle of angiosperms. We have already discussed about that in angiosperms the plant body which is visible to us is sporophyte. So that we can say that the life cycle of angiosperm starts with sporophyte. Okay, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो प्लांट बॉडी हमारे सामने हमें नज़र आती है वो क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है. तो एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल किससे स्टार्ट होगा, स्पोरोफाइट से स्टार्ट होगा. लेट डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. द मेन प्लांट बॉडी विच इज विजिबल टू अस इज स्पोरोफाइट. ठीक है, and this part is called roots. Modified roots perform many functions. It provides support to the plant, it anchors the plant, and the portion above the ground is called stem. Stem has the various branches, it has many structure called leaves, and it has many reproductive structures called the flowers. Many leaves, flowers. These are the structures which are going to help in reproduction. Okay, we have already discussed in the morphology of a flower that this is gynoecium and this is androecium. Okay, androecium the male reproductive part and the gynoecium the female reproductive part, and this structure is also called the anther. The anther with its filament attached to it. Okay, and this is spore producing structure and this is microspore producing structure. It is called microsporophyll. We have already discussed in the previous video that flower is a modified stem, okay, and androecium is a modified leaf, and it produces spore, it produces microspores, so it is called microsporophyll. Okay, now we can see that longitudinal section of this anther or transsection of anther. There are 4 pollen sacs, 1, 2, 3 and 4. There are 4 pollen sacs, and inside these pollen sacs microspore mother cells are present. These microspores mother cells are diploid. I mean to say that these are 2n. 2n means these microspore mother cells are diploid. ये हम एंथर के ट्रांसेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें 4 पोलन सैक्स हैं. हर पोलन सैक के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मौजूद हैं. ठीक है, इनके अंदर भी मौजूद हैं, इनके अंदर भी मौजूद हैं और इनके अंदर भी मौजूद हैं. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड हैं और इनमें मियोसिस होगी. इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ओके, तो इनमें मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर्स आए हैं, जिन्हें हम इस स्टेज को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स टेट्राड स्टेज. दे रिमेन्स टुगेदर फॉर सम टाइम. दीज माइक्रोस्पोर्स जो कि टेट्राड हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, इस स्टेज में रहेंगे. देन दे गेट सेपरेट टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स. यू कैन सी दैट these microspores tetrad stage से जब ये माइक्रोस्पोर्स सेपरेट होंगे तो ये 4 माइक्रोस्पोर्स बना देंगे. एंड now these microspores changes into a pollen grain.
Okay, these microspores changes into a pollen grain. This is a pollen grain and it has two layers. The inner layer highlighted in blue in color is called antine, and the outer zigzag, the layer which is black in color, is called axine. And inside these two structures are present. This structure which is larger called the tube cell, just like nucleus, and the smaller spindle shaped cell is called generative cell, and this generative cell gives rise to a male gamete. This is a pollen grain and microspores give rise to a pollen grain. We can say that these microspores changes into a pollen grain, and this pollen grain has two layers. The inner layer is called antine, the outer is called axine, and inside this the tube cell is present, and smaller spindle shaped cell which is called generative cell is present, and this generative cell gives rise to a male gamete. So we can call that this is a male gametophyte. Okay, and this is a short-lived structure. This male gametophyte is a short-lived structure. Now we discuss about the female reproductive part, gynosium. It has three parts: ovary, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ठीक है, अगर हम इसकी हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ अ मॉडिफाइड लीफ, वी कैन कॉल इट अ मेगास्पोरोफिल, एंड गायनोशियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. अगर हम इसकी ओवरी के लॉन्गिट्यूडिनल, जस्ट जो स्मॉलर ओवरी है, इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बात करें तो ये देखें, ये हमने ओवरी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट, और ये जो आपको लेयरिंग नज़र आ रही है, ये दो, इस साइड पे भी दो लेयर्स हैं, इस साइड पे भी दो लेयर हैं, तो कहते हैं ओव्यूल इज अ बाइटेगमिक. इनसाइड दिस लार्ज पोलन सैक इज प्रेजेंट, एंड दिस लार्ज सैक इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. ठीक है, और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, एग प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और 3 एंटीपोल्स प्रेजेंट है. Let's talk about the pollination, and this is female gametophyte because it gives rise to female gametes. और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये जनरेटिव सेल it will give rise to a male gamete, और यहाँ से हमें फीमेल गेमिट हासिल होगा, तो pollination होगी. उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस को देखते हैं. न्यू प्लांट, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, जैसा कि हमने एंजियोस्पर्म में देखा. इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स. ठीक है, मेन प्लांट बॉडी वाज स्पोरोफाइट, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, एंड देन दी स्पोर्स गिव राइज टू अ पोलन ग्रेन. ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वन पोलन ग्रेन गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स. ओके, ये बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि एक पोलन ग्रेन कितने गैमेटोफाइट हमें दे रहा है, गैमेट्स दे रहा है, 2 मेल गैमेट्स दे रहा है. ठीक है, अब पोलिनेशन होगी, पोलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. ये जो पोलन ग्रेन है ये किस पे फॉल करेगा, स्टिग्मा पे. ठीक है, द पोलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, एंड देन इट जर्मिनेट. ये जो सेल आपको नज़र आ रहा है जिसे हमने लार्जर ट्यूब सेल कहा था, दिस ट्यूब सेल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब. ठीक है, ये ट्यूब बनेगी, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है पोलन ट्यूब. दीज ट्यूब सेल्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस दिस पोलन ट्यूब, एंड द स्मॉलर जनरेटिव सेल, this smaller generative cell undergo mitotic division to produce 2 male gametes. These 2 male gametes, the first male gametes fuses with this egg which is present in this embryo sac to produce a zygote. ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करेगा
इस एग के साथ और क्या बना देगा, जाइगोट, एंड दिस जाइगोट गिव राइज टू अ एम्ब्रियो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड द सेकंड मेल गैमेट, it fuses with these two polar nuclei. Okay, with these two polar nuclei, this second male gamete fuses to form a triploid cell, and this triploid cell give rise to a endosperm, and endosperm is a nutritive tissue, and this is called triple fusion. हमने ये देखा कि one pollen grain give rise to a two मेल गैमेट्स. ठीक है, कैसे यही जेनरेटिव सेल जो था, इट गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स. द वन फ्यूजेस विद द एग एंड द सेकंड फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई एंड टू फॉर्म triploid cell, which is called endosperm, and this is a nutritive tissue. And both these two processes, the first is called fertilization and the second is called triple fusion. These two processes together are called double fertilization, and it is the characteristics feature of angiosperms only. Zygote give rise to embryo, ovule changes into a seed. It means that embryo is inside the seed. Ovary changes into fruit. So inside the fruit it is a seed. Inside the seed this is embryo, which develops into a new plant. We know about types of seeds. The one monocot seed, the second one is dicot seed. If we draw a dicot seed, the seed having two cotyledons is called dicot seed. And if we remove the seed coat, it is an embryonal axis. This one is radicle and this one is the plumule. These are two cotyledons in dicot seed. Radicle give rise to a future root and plumule give rise to a future shoot. This seed germinate to produce a baby plant, which is called the sporophyte, and this sporophyte plant produces microspore, megaspores. These spores germinate, and then spores are changes into a pollen grain, and pollen grain give rise to a male gametes. ठीक है, and female gametophyte generation give rise to a female gametes. The pollination occur and this cycle goes on. This video is all about the life cycle of angiosperm. Thank you so much for watching.